Hello everyone. Okay. Welcome back to Wednesday Wisdom Session. I Ankit Rajat along with my co-host Megha Upadhyay. Welcome our all viewers in today's special webinar on Born Global Attitude and Mindset for a Startup, organized by Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center. Every week we brought you my good topics which help you in your journey of a startup. So today with us we have very special guest Dr. Vinod Tiwari. On behalf of Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center, we welcome you, sir. Thank Let you very me much. introduce our today's speaker, and then we will going to start today's session. So, Dr. Vinod Tiwari, who is a UAE leading entrepreneurship consultant, serve as an engineering director of the Electron Group and have 30 years of rich experience in engineering industry. He is an international speaker and global podcaster and conducted more than 130 seminar in India and UAE. He is also a regional mentor at Atal Innovation Mission Niti Aayog and authored an ebook titled From Dreaming to Achieving in Life, which is available globally at Amazon Kindle. He is expertise in solar sector also, and he conduct more than 100 sessions especially for startups and entrepreneurship community. So once again, we hearty thanks to you, sir. You accept our invitation and given time for our incubation center. Now I request to you, kindly please start your session. Okay, perfect. So, first of all, I would like to convey my thanks to the Jabalpur Incubation Center, Ankit, and all your team to having me over here. This is really a great honor for me to, share my experience to all of the guys. So, I hope my audio, video, everything is okay. Correct? Thank you. Yes, all clear, sir. Thank you. So, see, guys, I would like to invite all of you guys over here for this extraordinary special session. And here, what would be our agenda that we'll be sharing something on this particular topic about the mindset, about the attitude, about the startup basics. And then around 40 minutes, I would try to finish my presentation, or maybe within 30 minutes. So 30 to 40 minutes, I'll try to cover all those things. And after that, I would request, if you have any kind of question, query, or anything you want to ask, please feel free to ask. And thank you, Ankit, for my introduction. And right now, I'm in India, and right now I'm making this session from the city of Madhya Pradesh. And this time I'm in Gwalior. And let me tell you that I am very much well connected to Jabalpur because my younger brother, it's a birthplace of my younger brother. So this is something a great place to close to my heart. So now I'm going to start my presentation, and with this presentation, I will take you to step by step. So that would be great for all of us. So I hope that my presentation is visible now. Okay, I hope it is visible. Yes, sir. Visible. Please proceed. Wonderful, wonderful. Thank you very much. So this basically the topic, today's topic is about global attitude and mindset for the startup. So I hope that the people connected over here are those all who are really at the early stage or mid stage of the startup, right? I'm considering my audience and participants of that level. And as I requested Ankit that what language would be okay, so he requested me to make it mixed, so I'll try to make it in Hindi as well. तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी भी बोलूं और इंग्लिश भी बोलूं and try to mix it up. So my message today from this session would be to act local and think global. Okay, so I'll try to give you some kind of a data, some kind of details where it will be helpful for you to start the
any kind of a venture or entrepreneurship, or kind of a small business or kind of a big business, with these two things. Number one is a startup basics, where there will be 6 points, and second is a mindset building. So these two topics we are going to cover. Okay, so you can expect these couple of things. Now, before I start, let me just give you a data that close to around close to around 1 million ideas are popping up in a length of a time across the globe, right? 1 million ideas. Now what happens, out of those 1 million ideas, around 100,000 get startups are getting possible into the startup venture or entrepreneurship, or at the venture level, right? Or go to the incubation center. So out of 1 million, it is 100,000. And very sorry to say, out of 100,000, only 10% of them goes beyond. They gets really into a positive way, or they are basically, I should say, they are alive, or they are okay. And there is one more data which is not good. Out of those 1,000 startups which are actually live within 5 years, out of those 1,000, 90% of them got fails. They don't survive, they don't go ahead. Why? Now I'll tell you the reason. I have been talking to many entrepreneurs, businessmen, or like small ventures or startup budding startup people at New York Abu Dhabi University or Paris Sorbonne University in Abu Dhabi. So I was checking with them, and they all have to say that we were at some point of time got frustrated, got disappointed, and we were not having a kind of a force or internal motivation or something, so we could do it. Otherwise, all the resources, everything was there. So the major thing which is lacking is not the hard skills. Okay, so understand that the kind of ideas, the kind of way, the kind of government formalities, the kind of venture capitalist, all those things are available, and everybody is will be helping you. Even Jabalpur Incubation Center is doing great job in that. But I'm going to tell you that what is the major thing which can contribute to your success is the soft skills, is the you, right? And which is not being taught, unfortunately, anywhere. So hence I will try to cover little hard skills and more soft skills, and you can pick the relevant which one you like the best. So here are the basic 6 elements. Okay, the basic 6 elements which are really required for the startups. First, collab with the like minds. So I'll cover these all 6 points in detail. Second is a do deep research. Third is a solution. Fourth is basically marketing, which is going global. Fifth is actually making your presenting your values. And last is to be patient. Okay, so these are basically 6 major things. If you sum up complete startup process step by step, these are the only 6 steps everybody has to go through it, right? So I'll just start with the first one. What exactly I mean by the collaboration with like minds. So guys, before you start your idea or something, what you need, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग टीम, आपको चाहिए आपका नेटवर्क, आपको चाहिए एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दोस्त जो आपको आपके तरीके से समझ सके. You need a great kind of association to start with, right? So this is the first and the major thing which you have to decide, because generally, I mean, I am saying generally, but this is not generally, it's rarely. Partnerships don't survive. But apart from that, the another part is also true, that individual people very rarely start the startups. Okay, so partnership does has to start, but generally it doesn't last. Forget about it. But you have to think somebody who can be there for a long term. So this is the first thing you have to do. And second is that you have to make your ethics, make your principles, make your work ethics, everything very, very much crystal clear. So once you have a very nice, strong team,
where you have the no financial challenges, no emotional challenges, no mental challenges, or kind of any challenges, and you both, or you together, or you all of you can work together, then this is the first basic concrete foundation thing which you have to think of. After you make the team, then second thing is what you want to do. So you have to make a research. Okay, now many of you would have already gone through this process, because not in India but across the globe, there are so many problems, or I should say there are so many challenges, or I should say that there are so many areas or gap where somebody has to work upon. So you have to find that gap, you have to find that problem, because checking the problem is not easy. It is visible but it is invisible. Okay, it is visible by your naked eyes, but you have to observe it, you have to go through it, you have to understand it, that whether I can provide a good solution to them or not. Okay, so this is the second part where you have to work very deeply, because once you make the things happen, then you cannot unrule it, or you cannot go back. So before starting anything, you have to make a research. And what I've written, see the unseen, means you have to see the things which is really visible but people are not observing it. Like I'll tell you, if I come to you and if I'll ask any of you that guys, there is a big problem of the food delivery. Okay, means the food is being made at this restaurants and big hotels or some dhabas, but people are ordering and they are facing a lot of challenge. तो आप बोलते हैं ये कौन सा चैलेंज है और ये कौन सा कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है. दिस इज नॉट काइंड ऑफ बिजनेस. लोगों को खाना वहां पर ढाबा मिल रहा है और वहां से वो लेके भी आ सकते हैं, वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं, फोन से भी कर सकते हैं. बट व्हाट काइंड ऑफ, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट कैन नॉट बी अ बिजनेस, इट कैन नॉट बी एनी स्टार्टअप. देयर इज नथिंग आई कैन वर्क अपॉन, बिकॉज थिंग्स आर मूविंग ऑलरेडी. ओके, there is a food industry, there is a hotel industry, there is a restaurant industry, and there are customers nearby to them, and they go and buy the shop, they shop it out, right? आप बोलोगे इसमें कौन सा बिजनेस हो सकता है, but yes, one guy saw that and he started a company called, you know the name, Zomato or Swiggy, right? They started, and what they did, they just tried to bridge that gap. They found that there is a problem where I can give a solution, and solution should be for millions, not for some people. Now after the problem, when you find it a problem, then you have to make a create kind of a product or services. Okay, that's as simple as that. So after you find out that this is the gap and I can bridge that gap with my expertise, with my skills, with the help of technology, and with the kind of a infrastructure do I have, or with the kind of mentorship or help. So you have to find some kind of a innovative product. Normal product is okay, but innovative product which is which can sustain at least for next decade or more than that. So after you find out a product or service, the next thing is that you have to help millions of people. Long back I read somewhere that if you help millions, you make millions, right? Which is very true. So your goal should be that you can reach out to people anywhere across the nation and across the international. So everywhere, if you see the same kind of thing, then this is the real great thing. You should not waste your time, and you should start it immediately. Now, next important thing is that do not stay in your city or in your mohalla or in your state. प्लीज जबलपुर से बाहर निकलिए, जबलपुर से बाहर निकल करके पूरे मध्य प्रदेश में आ जाइए. And don't, not only Madhya Pradesh, you should go national. And here I should say that people don't have the ambition level. I found this thing, they don't have that kind of aggressiveness, or they don't have that kind of a dedication. I met many of people over here, even in Gwalior, or I'm living in Ahmedabad. So I ask people that you do have such a big brand name or something and all. Why are you limiting yourself to this particular city? Why don't you go national? तो वो बोलते हैं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, अभी मैं क्यों करूं. भैया मैं तो आपको नेशनल की बात कर रहा हूं, बट यू शुड थिंक ऑफ इंटरनेशनल. डोंट थिंक ऑफ 29 states of India, think about 200 countries of the global
of the world, right? So your goal should to go global. जब आप चंद्रमा की टारगेट नहीं करोगे, चंद्रमा को टारगेट करोगे तो स्टार्स तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन आप उससे छोटा टारगेट करोगे तो कहां पहुंचोगे? So think big, because there is not a monopoly on any of these things. Yet you can broaden your horizon. Unless until you broaden your horizon, you cannot expand. You cannot think of that way. So this is the major thing you have to think about. The fourth important thing, when you start something, slowly, gradually, you should grow. I'm not telling that go quickly at the first level, but yes, this should be a goal of your at least down the line of 10 years, right? Now, next thing is that when you are starting a venture or kind of a startup, we always try to make it very cheap, very economical, at very low value. I am really against it, of it. I don't want that you should not make profit out of it. What I want is that if you have put your time, efforts, energy, and everything, you should make a real easy solution, but you have to make a value out of. If you give value out of it, you can really make big profits also. So do not try to underestimate your product or make it very cheaper or economical, because let me tell you, there are people who want to pay the price. People are there everywhere. You will find, I'll tell you that when you are going outside and you're searching, or in the Google you're searching, तो आप Google में जाकर के क्या सर्च करते हो कि सबसे सस्ती मिठाई कहाँ मिलती है? ऐसा तो नहीं सर्च करते, आप करते हो सबसे अच्छी मिठाई कहाँ मिलती है, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, सबसे अच्छा कपड़े की दुकान कौन सी है, सबसे अच्छी मोबाइल शॉप कहाँ पर है. तो पीपल आर सर्चिंग फॉर द गुड एंड दे आर रेडी टू पे द प्राइस, एंड यू हैव टू मेक योर प्रोडक्ट वर्थ ऑफ इट. ओनली आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग ब्रांड खरीदते हैं. एंड वंस यू मेक इट अ वैल्यू आउट ऑफ इट, यू मेक इट अ ब्रांड, एंड देन पीपल आर रेडी टू पे एनीथिंग. लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एप्पल के प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूं कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट के बाद में जो सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें और एप्पल के प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस है. एंड सी, everybody around the globe, they know that how much profit is being made by Apple. They are making huge profit, but yes, they are giving the best of the best quality product as well, and they give the value. So where is the problem? There is not a problem of money. You can make money, but you have to make it a good and easy solution, and you have to provide a value. So these are the 5 major things. Now the 6th one is the really good one, and I am sure that people will like it. The guy on the right side in the screen is having a thumbs up and a beer mug. So let me tell you, once you are doing this thing, you should have a set of mind. You should know that this journey is not going to be easy. It's not going to be simple. It is tough, and you should be patient about it. You should be patient, right? You should not panic, right? कि 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी हो सकता है कुछ ना भी हो. You have to set your deadlines or timelines for at least 2 to 3 to 5 years, right? And let me tell you, things doesn't happen like this. Okay, it takes time. कहावत है ना कि Rome was not built in a day. तो जो बड़ी चीज होती है और बढ़िया चीज होती है ना, उसके लिए समय तो लगता है. तो if you are going and making something big and something different and something unique, let me tell you, it's going to take time. So be patient, and you have to enjoy as well. If you are frustrated, if you're disappointed, or if you're thinking all the time of that, maybe you will, you will get broke in the journey. So the major thing is that कहावत है ना कि success is not a destination, it's a journey. Success is a journey. So enjoy the journey. ये जो आप जर्नी अभी करोगे 2, 5, 10 साल, मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे हो, बट आप जो जर्नी करने वाले हो, इस जर्नी को याद करके आने वाले 10, 15, 20 साल बाद एंजॉय करोगे. लेकिन वो जो फ्रूट मिलेगा वो तो मिलने ही वाला है. सो थिंक अबाउट द जर्नी, एंड यू शुड रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी एज वेल. ओके, एंड कहावत है कि वट एवर यू कैन डू इट पेशेंसली. आप अच्छे से मेहनत करके करिए, एंड देन व्हाट यू कैन नॉट डू, लीव इट ऑल दोज थिंग्स टू द गॉड, एंड गॉड विल मेक इट हैपन. So these are the 6 basic things which I want to cover. Now this was the hard skill parts, so I hope that I'm going on time. It's 1:20, so within 20 minutes I covered these things. Another 20 minutes I would be trying to cover the
सॉफ्ट स्किल्स। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे हिसाब से। मैं द वे आई स्टार्टेड कि थिंग इज दैट कि पीपल गेट ब्रोक इन द जर्नी बिकॉज ऑफ नॉट द रीजंस ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम्स बट बिकॉज ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ आपको एग्जांपल देता हूं। जब एक किसान खेती करता है, फार्मर, व्हेन ही सो द सीड्स, बहुत सारे जब वो सीड्स डालता है तो वो हजारों हजारों सीड डालता है, लेकिन उन हजारों सीड्स में से क्या वो हजारों सीड्स हजारों पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। यस, नहीं होता ऐसा। वो हजारों में से कई तो पक्षी खा जाते हैं, कुछ जो है ज्यादा पानी से मर जाते हैं, कुछ ज्यादा धूप से मर जाते हैं, और कुछ यूरिया से मर जाते हैं। अब जो कुछ बीज होते हैं, वो कुछ बीज ये सब एडवर्स सिचुएशन को भी सहते हुए अपने आप को पौधा बना पाते हैं, और उन पौधों में से भी कई जो पौधे बन जाते हैं, प्लांट लेवल तक ग्रो हो जाते हैं, उन प्लांट से भी बहुत बहुत कम सीड्स होते हैं जो अपने आप को आगे वृक्ष या पेड़ बना पाते हैं। सो आई वांट टू मेक श्योर दैट आई वांट टू मेक द सीड स्ट्रॉन्ग। दिस इज नॉट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो इंडिया के चैलेंजेस हैं, धूप के चैलेंजेस है, फाइनेंस के चैलेंजेस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, शेयर मार्केट है, बीजेपी है, आरएसएस है, जो जो प्रॉब्लम्स है, या जो कांग्रेस, आई डोंट नो, दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरीवन, सबके लिए सेम है। लेकिन कुछ जो बीज हैं वो बन जाएंगे पेड़, और कुछ ये सब प्रॉब्लम्स में ही वो मर जाएंगे। तो मैं सीड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं ऐसा सीड बनाऊं जो इन एडवर्स सिचुएशन के बाद भी अपने आप को विनिंग स्टेज पे ले जाए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू हैव अ माइंडसेट। ओके, माइंडसेट इज द राइट एंड द करेक्ट वर्ड। व्हाट एग्जैक्टली इज द माइंडसेट? बिकॉज जिसकी धुन चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ना कि वो धुनी है, जब धुन चढ़ जाती है तो उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही दिखाई देता है, अपना गोल, और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन बाकी लोगों को दुनिया भर की सारी प्रॉब्लमें दिखाई देती है। कहावत है ना कि यू कैन ईदर सी द ऑब्स्ट्रकल्स और यू कैन सी द सक्सेस, यू कैन नॉट सी बोथ एट ए टाइम। आप या तो सफलता को, अपने गोल को देख सकते हो, या फिर ऑब्स्टेकल्स को देख सकते हो, दोनों को नहीं। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपका कैसा चल रहा है व्यापार, और हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू सी। तो जब वो चैलेंजेस मैं उनसे सुनता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसको दिखता क्या है, ये देखता क्या है, और उससे मुझे समझ में आ जाता है कि उसका बिजनेस कहाँ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलत जगह को देख रहे होते हैं, हमारे गोल्स गलत होते हैं, हमारा माइंडसेट नहीं होता है। तो वी हैव टू क्रिएट दैट माइंडसेट। नाउ लेट मी टेल यू कि बिफोर यस्टरडे नाइट आई वाज थिंकिंग, लेट मी जस्ट चेक इट आउट व्हाट एग्जैक्टली माइंडसेट इज। तो मैंने ऑक्सफोर्ड में देखा, ऑक्सफोर्ड के अंदर में द डेफिनेशन कम्स आउट, अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, ध्यान दीजिएगा, a set of attitudes or fixed ideas that somebody has and that are often difficult to change is called the mindset। यानी आपने अपना एक परसेप्शन बना रखा है, आपने आइडिया, एक वो चश्मा पहन रखा है, और अब आपको दुनिया वैसे ही दिखती है, और वो डिफिकल्ट है चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। सो दिस माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप खुद हो। शायद समझ में नहीं आई होगी। दुनिया वैसे नहीं दिखती जैसी दुनिया है, दुनिया वैसे दिखती है जैसे हम खुद हैं। तो हम कैसे हैं, हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारी जो अंदर इंटरनल जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इंटरनल जो हमारा प्रोसेस है, वो कैसा है, that is more important. So that has need to be worked upon, and how it is possible, I'll just go through it. So what kind of mindset is required? Number one, it is required to be global. It should not be local, it should not be national. Think about the California, think about the Sweden, think about the Europe countries, think about America, Japan, UAE or whatever. आप इतना सा मत सोचो अपने गांव का, अपने शहर का, और अपने मोहल्ले का मत सोचो, अपने शहर का मत सोचो। बहुत बड़ी दुनिया है, देयर आर +7 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ, राइट? और आपका आइडिया 7 बिलियन लोगों में न बिके, ऐसा हो नहीं सकता। पर वही है कि आप अपना प्रोडक्ट कितने लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करते हो। सो नंबर 1 इज द ग्लोबल माइंडसेट यू शुड हैव। सेकंड इज द ग्रोथ माइंडसेट। It should not be fixed mindset. All the time you should be thinking of the positive things, what can happen, what can I can do. Now, now your mindset represent the complete sum of your thoughts and beliefs, shaping the way you interpret your world, right? This is the way you and this is all everything in it. And this is a kind of a literal sense, meaning, right? A mindset cannot really be faked because it is internal. हम इसको
फेक नहीं कर सकते, यू नो, इट्स इंटरनल, अंदर की बात है। तो माइंडसेट होता क्या है, उसको कैसे बदल सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे हमको बनाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको लेकर के चलूंगा नेक्स्ट थिंग विच इज कॉल्ड एटीट्यूड। नाउ व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज अगेन, इट्स अ वेरी वेरी यू नो ब्रॉड सब्जेक्ट। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एटीट्यूड सबके पास होता है, लेकिन एटीट्यूड हमारा होना कैसा चाहिए? पॉजिटिव। एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वी शुड हैव अ पॉजिटिव। नाउ योर, ये ऑक्सफोर्ड का जो डेफिनेशन है वो मैंने ढूंढी थी। योर एटीट्यूड इज हाउ यू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हाउ यू सी द थिंग्स। ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि हम देखते कैसे दुनिया। नाउ यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी लेना चाहूंगा। एटीट्यूड पॉजिटिव क्या होता है, और इसको शायद आपको स्टोरी से ज्यादा समझ में आएगा। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम श्यामलाल। ठीक है, रामलाल पॉजिटिव एटीट्यूड, श्यामलाल नेगेटिव एटीट्यूड। ना होता क्या था कि रामलाल हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से लेता था, यानी एडवर्स सिचुएशन को भी पॉजिटिव में लेता था और ये एडवर्स सिचुएशन को नेगेटिव में लेता था, मतलब पॉजिटिव को भी नेगेटिव सिचुएशन में लेता था। एक बार क्या हुआ, उसके श्यामलाल के पास से गुजरे तो श्यामलाल बहुत रो रहा था, परेशान था। लोगों ने पूछा, भाई श्यामलाल व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू एंग्री, मतलब रो क्यों, परेशान क्यों? कहता भाई मुझे आज सुबह सुबह 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। कहते 10 लाख का घाटा? तो थोड़ा सा वो मतलब डर जाते, कहते 10 लाख इज अ बिग अमाउंट, हाउ कम, कैसे हो गया, तुमने शेयर मार्केट में खो दिया क्या? बोले नहीं नहीं, शेयर मार्केट में नहीं करता। बोले फिर कैसे हुआ, ज्वेलरी चोरी वगैरह हुई क्या? बोले नहीं, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ? कहता दरअसल हुआ ये कि मैंने एक लॉटरी खरीदी थी और वो एक नंबर से 1 करोड़ की रह गई। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ये एक नंबर से 1 करोड़ की रह गई, अभी तुम 10 लाख का नुकसान बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आई बात। बोले नहीं, वो नीचे में जो नीचे था उसमें 90 लाख रुपए की तो मेरे को मिल गई, लेकिन वो 1 करोड़ वाली रह गई, तो 10 लाख का मेरे को नुकसान हो गया। तो वो माथा पीट लेते, बोले आपको 90 लाख की लॉटरी लग गई है, करेक्ट? बोले हाँ लग गई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, 10 लाख रुपए की रह गई क्योंकि 1 करोड़ मेरा एक नंबर से रह गया। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ ओके ओके गुड गुड गुड। वो कहते हैं आप रोइए, मैं निकलता है। दोस्त चले जाते हैं, दूसरे के पास में जाते हैं। दूसरा कौन था? रामलाल, द पॉजिटिव मैन, द गाय। सो ही वाज वेरी हैप्पी। वो कहता है आइए आइए, आज मैं आप लोगों को नाश्ता करवाता हूँ, खाना खिलवाता हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह मतलब कल शाम को मेरे को 10 लाख रुपए का फायदा हो गया। ओ तो वो क्या समझ जाते हैं, कहते हैं तुम दोनों लगता है लॉटरी वाले हो, तू लॉटरी खेलता है क्या भाई? बोला नहीं मैं तो लॉटरी नहीं खेलता। तो बोले फिर 10 लाख का कैसे फायदा हुआ? कहीं शेयर मार्केट या उसमें तो नहीं? बोले नहीं नहीं वो भी नहीं करता मैं। फिर कैसे 10 लाख का फायदा हुआ? वो कहता है भैया मैं ना रोज अपने बैग में कैश 20 लाख रुपए लेकर के जाता हूँ, रोज लेकर के जाता था। और मेरी वाइफ रोज गुस्सा होती थी कि तुम 20 लाख रुपए इतना कैश क्यों लेके जाते हो, 10 लाख रुपए घर रख के जाओ और 10 लाख ही ले जाया करो, कुछ हो गया तो। और कल ही मेरा बैग चोरी हो गया, तो मेरे को 10 लाख रुपए जो घर पे थे वो बच गए, क्योंकि यदि कल भी 20 ले गया होता तो सोचिए, एक व्यक्ति जो कि 10 लाख रुपए खो चुका है वो फिर भी बचे हुए को देख करके खुश है, और एक आदमी जो 90 लाख पा चुका है और वो 10 लाख नहीं मिले उसको सोच के दुखी है। सो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। ये आपका नजरिया है। नजरिया इज राइट वर्ड बाय द वे, हिंदी राइट वर्ड। सो दिस इज द नजरिया, हाउ यू सी द वर्ल्ड, हाउ यू सी द थिंग्स। नाउ एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इट इज एवरीथिंग। मैं आपको बताऊं कि जितने भी बिजनेसेस और जितने भी लोगों को मैं मेंटरशिप देता था यूएई के अंदर में, उनको मैं एक ही बात बोलता था कि आपका एटीट्यूड ही डिपेंड करता है, वही आपका डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस आने वाले टाइम में मल्टी मिलियन या बिलियन का होगा या उसी लेवल पे रहेगा। This is nothing but an attitude. So attitude is basically an external thing. A person attitude towards a thing, person, an event, an idea can be usually determined with a relative ease through simple observing and examining their behavior or how they approach. आप किसी को भी पता कर सकते हो उनकी अप्रोच से, जैसे मैंने कहानी बताई तो शायद आपको क्लियर हुई होगी। So this is the second thing which is very much important. First is mindset, second is attitude. Now the third and the last thing is thinking. Now दोस्तों सोचते तो सभी लोग हैं शायद, है? आपको क्या लगता है कि क्या आप सोचते हो? देखिए मैंने एक डाटा पढ़ा था, शायद आपको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जबलपुर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमपी और इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, इवन दुबई में भी, पूरी दुनिया के अंदर में 100% लोग नहीं सोचते। तो आप कहोगे फिर कौन सोचता है? हम भी तो सोचते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में से 3% लोग, सॉरी 100 में से 80% लोग बिल्कुल ही नहीं सोचते, मतलब दे डोंट डू दिस जॉब ऑफ थिंकिंग।
They never think. They are doing the things just in a normal way. जैसे एक मरी हुई मछली भी तालाब में डाल दो तो वो बहती बहती कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, ऐसी उनकी जिंदगी चल रही है। उनको कुछ नहीं पता वो जी क्यों रहे, खा क्यों रहे, मर क्यों रहे। दे डोंट नो, दे आर जस्ट हियर जस्ट फॉर सर्वाइवल। वो जिंदा है, ये बोलना चाहिए एक लाश है, लेकिन उनके सांस चल रही है। I'm sorry to say this word, but they are like that. 80% of people really don't think. Now, out of 20% people, 17% people think that they are thinking. समझ में आई बात आपको? 20% में से 17% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो सोच रहे हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं सोच रहे। इस पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 3% लोग ही सोचते हैं। सो I want to encourage you, I want to motivate you that you should be at least in that 20% people, or you should be in a 3% people. And I know and let me tell you, thinking is not an easy job. It is the toughest, it is the difficult job in the world, right? But you have to start thinking differently. Now, Albert Einstein क्या बोलते हैं? The world we have created is a process of our thinking. It's not a process of doing, it's not a process of dreaming, it's not a process of doing it. It is a process of thinking, because सब कुछ सोच से ही शुरू होता है. It cannot be changed without changing our thinking. यानी आपको दुनिया बदलनी है तो आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा, अपना सोच बदलनी पड़ेगी. So this is the very important thing for the budding startups, that you have to start thinking differently. वो शिव खेरा is a good speaker. What he says that winner don't do different things, they do things differently. वो काम वही करते हैं लेकिन अलग ढंग से करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग. बहुत सारे प्रकार की थिंकिंग होती है. हम थिंकिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट लेट मी टेल यू, इट इज फ्रॉम द परसेप्चुअल थिंकिंग टू द क्रिटिकल थिंकिंग. एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज अ हायर ऑर्डर, well disciplined thoughts process which involves cognitive skills and like conceptualization, interpretation, analysis, synthesis, evaluation. So these all things comes when you start your process from the perceptual to the critical thinking. And when you do that, then you're really doing the out of box thinking. You don't do the things in the box, right? So these are the major three parts which I want to cover. Number one is the mindset, number two is the attitude, number three is the thinking. So these all things you can change at your own pace. Now let me tell you कि बाकी जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर में, आपको बनानी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी डालनी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे बाहर, who can do a good coding, right? And if you want to start a mechanical company, you will find mechanical engineers, you will find electrical engineers, whatever expertise or knowledge you want, you will get it. यानी ट्रेन के अंदर में डब्बे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो जो इंजन है वो आप हैं, वो आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते. सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ सच ए स्ट्रांग, बिकॉज यू हैव टू लीड the people, you have to lead the startup, you have to lead. And once you go to that thinking process, then you start thinking yourself very differently. And let me tell you, to sum up, that these all things are possible only when you change your environment. Okay, when you change your environment, your thinking change, your attitude change, and your mindset will develop. So मैंने भी ऐसे ही बदला. I was not a kind of a guy, but I have changed myself during the time. And when I changed my environment, how it can be changed? By positive people, by meetings, by seminars, by reading good books, by listening to the motivational, by speaking. So these all things, these are all the ways where you can change your environment, and you can change your thinking. Now that's all. This is all I want to talk. Now here is something, a giveaway for all of you guys. As Ankit told that means I authored a book which is called From Dreaming to Achieving in Life, and this book is available in 47 countries. Even in India it's available. So it's costing around 249 rupees. I'm going to give this book free of cost to all the participants, right? But there is a condition. I don't give anything for free. There should be some value out of it. So there is something I would encourage you to write a good feedback on this Google business of mine, so that all those people who would be writing feedback with a 5-star rating, I would be happy to share my ebook to all of you. And you can, how you can write the feedback, you can just take a screenshot of it, or you can scan this barcode,
or else if you cannot do this, if you cannot scan this barcode, what you can do, you can simply type on your Google bit.ly bit.ly/Vinod review, VINODREVIEW. So just you can type it on Google and you will find a page where you can just rate and review on my Google page. I just repeat, it is bit.ly bit.ly/Vinod VINODREVIEW. So this is all from my end. I really again want to thank to the team, Jabalpur Incubation Center. They are doing great job, and I know Mr. Ankit since a long time. He has been doing a great, fantastic job for Atal Tinkering Lab, and he has been associated with this AIM with Niti Aayog since a long time, and this is all. So if you have taken a screenshot, or you can take this link from your team as well. I would go to the next slide, and that's all from my end for today. So this is my social media handle. I'm available on all these platforms, Instagram, LinkedIn, Facebook, whatever. And you can just Google me at IAM Vinod Tiwari, so you'll find the social media. And that's all. Thank you very much. And here is the... That's a Thank you. very crisp session from your side. विनोद जी, मैं थोड़ा सा आपका पर्सनल व्यू जानना चाह रहा था. आपने करीब 10+ more year UAE में वर्क किया है, and in India now we are in good stage to accelerate and provide a good force for startup. एक काफी अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव नोट में है, और हमारा जो यूथ है उनके पास बहुत सारा पोटेंशियल है. बट यूएई का अलग है, अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं, उनके पास अलग तरीके का ह्यूमन रिसोर्स है. तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि यूएई में जो स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं, इंडिया में जो क्रिएट हुआ है, इसको कंटिन्यू करने के लिए किस तरीके का आपका व्यू है? Well, thank you, and it's a really good question that you asked. I just missed out to cover this point. If I want to see, let me tell you, it cannot be compared. The UAE and India, it's uncomparable. However, I'll try to pitch out how I can correlate these two countries. Sorry, मैं बीच में इंग्लिश में आ जाता हूँ. So UAE is a world जहां पर मैं बताऊंगा कि द पॉपुलेशन ऑफ यूएई इज लेस देन इवन अ करोड़, मींस इवन 1 करोड़ लोग भी नहीं है, और वहां की जो इकोनॉमी है इट इज मच बियॉन्ड ऑफ अवर इंडिया. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. मैं अभी तक लोगों को एग्जांपल देता था कि पिछले करीबन शायद 8-10 सालों से वहां पर एप्पल के स्टोर थे, खुद के 3 स्टोर थे छोटे से यूएई में, और हमारे पूरे भारत में जहां पर 150-140 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर एक भी स्टोर नहीं था. अभी पहला और दूसरा स्टोर पहली बार खुला है, इसके पहले रीसेलर्स थे. तो कहने का मतलब है द गाइज आर रिच इनफ, दे हैव द वेल्थ, बट द बिगेस्ट lacking point for them is that they don't have the mind resource, and that's the reason वहां पर पूरे यूएई के अंदर में 1 करोड़ में से 11% तो लोकल के लोग हैं और 30% इंडियंस हैं. लोकल के लोग 11% हैं और इंडियंस 30% हैं, और वो हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं. तो यदि आपके पास में कोई ऐसा आइडिया है जहां पर आपको फंड की दिक्कत आ रही है, जहां पर आपको किसी एक्सपोर्ट की दिक्कत आ रही है, कोई नए कंट्री में बिजनेस ले जाना है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, डोंट गो टू सिंगापुर, डोंट गो टू थाईलैंड, डोंट गो टू अमेरिका, डोंट गो टू कनाडा, डोंट गो टू रशिया. द बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्लेस फॉर इंडियंस इज यूएई, बिकॉज यूएई हम लोगों को बहुत मानता है आउट ऑफ ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ठीक है ना, वहां पर बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको पता होगी, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहुत सारे. उन सब में से यूएई हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. And in case you want to get connected with any of those people who are really looking to fund for Indian startups, let me know. I have good contacts over there. So thank you. यस, वेरी वेल सेड कि आपका जो इनोवेशन है या आपका जो माइंड की वैल्यूज है वो उसको हर जगह पे वैल्यू मिलेगी. एंड यूएई इज द वन हु प्रमोट इनोवेशन, हु प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, हु एक्सेप्ट आइडिया व्हिच इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी. आपने बहुत अच्छी एक स्टोरी शेयर की थी रामलाल एंड श्यामलाल की, एंड आपने उसको रिलेट किया पॉजिटिव माइंडसेट से.
एंड समहाउ आई ऑल्सो हैव दिस कॉन्सेप्ट कि जो हमारा माइंडसेट होता है, कई बार हमारा जो परसेप्शन होता है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। लेट्स से एक बच्चा है, वो 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, तो उसने अपने इन्वायरमेंट में अपने चारों तरफ जो चीजें देखी, उससे उसका माइंडसेट डेवलप होता है। एंड इन चाइल्डहुड टाइम उसको खुद नहीं पता कि वो एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर रहा है या नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर रहा है। तो अगर लेट्स से कोई अगर रॉन्ग माइंडसेट पे है, उसको अपना माइंडसेट फिर से रिचेंज करना है, उसको फिर से पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो उसे अडॉप्ट करनी चाहिए? ये एक क्वेश्चन भी आया था, सजेस्ट फ्यू प्रैक्टिसेस टू हैव पॉजिटिव माइंडसेट। Wow, very nice. This is a really good question. And let me tell you कि इस चीज के ऊपर में जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट्स होते हैं या जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, नेशनल लेवल के जो धावक या प्लेयर्स होते हैं, वो लोग इस चीज पे काम करते हैं। इसको बोलते हैं कि आप अपने माइंडसेट को निगेटिव टू पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक वी हैव लिटिल टाइम। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारा, जैसे आपने बताया ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी, टीचर सब उस पर ना कुछ लिखते रहते हैं, और वो बच्चा बड़ा होने के बाद में वही पेज को मानने लगता है कि यही सच्चाई है और यही सच है, जबकि वो रियली में कुछ और भी कर सकता है। लेकिन उसको बोला जाता है तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। तो वो यही मान लेता है मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। अब उसको चेंज कैसे करेगा वो बच्चा या वो यंग बंदा? तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। यदि आपने नाम सुना होगा सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है कि हम अपने चेतन, हमारे इसमें दो मन होते हैं ना, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो अर्ध चेतन मन है, हम उस अर्ध चेतन मन को टॉक करके, उसको बार बार बोल करके हम उस अवचेतन मन को हम जगाते हैं। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कुछ भी कर सकता है और वो हमारी सब बातों पे बिलीव भी करता है। ठीक है ना? तो हम अपने आप को, खुद को पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोल करके अपने आप को पॉजिटिव एक टाइम के बाद में बना सकते हैं। लेकिन ये इजी प्रोसेस नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और मैंने बाय द वे एक पॉडकास्ट भी निकाला था। वो पॉडकास्ट है सेल्फ टॉक मोटिवेशन के नाम से, विच इज अवेलेबल ऑन एप्पल, गूगल और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो ये जो सेल्फ टॉक मोटिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे मैंने भी बहुत काम किया। यानी आप अपने अवचेतन मन को खुद बोल बोल करके एक टाइम के बाद में पॉजिटिव कर सकते हो। और छोटा सा आपको कुछ सेल्फ टॉक करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि आपको लगता है कि आप भूलते रहते हो, और आपका बॉस भी बोलता है, दोस्त भी बोलता है, तू तो भुलक्कड़ है, तू तो सभी भूल जाता है, तुमको तो याद ही नहीं रहती बात। और आपको धीरे धीरे लगने लगता है यार मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो भुलक्कड़ ही हूँ। तो आप सबसे पहले तो आप अपने मुंह से ये बोलना बंद करिए कि मैं भुलक्कड़ हूँ और मैं भूल जाता हूँ। तो आपको क्या बोलना शुरू करना है? अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कमांड देना है? आपको ये बोलना है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जिस आदमी को देखता हूं उसका नाम मुझे याद हो जाता है, मेरे को कोई बात बोली जाती है तो वो मेरे को हमेशा याद रहती है, और मेरे को सारी चीजें एकदम परफेक्टली परफेक्टली याद रहती हैं। सबकॉन्शियस माइंड को जब अपन कमांड देते हैं तो कोई नेगेटिव कमांड नहीं देना चाहिए। जैसे उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं अब कुछ नहीं भूलता, तो सबकॉन्शियस माइंड भूलना वर्ड सुन लेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको बोलूं कि आप नीले हाथी के बारे में मत सोचिए, तो आप कहोगे मैंने तो सोच लिया नीला हाथी। तो हमारा दिमाग उस पे पिक्चर्स पे काम करता है। तो इफ यू कीप ऑन टॉकिंग आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं याद रखता हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं टाइम पे जाता हूं, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं, मैं ये करता हूं, तो धीरे धीरे ये आपको हैबिट में आ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि ये सच है। शुरू में तो आपका खुद का दिमाग आपको बोलेगा कि ये क्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। सो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। Yes, very true. One more question we got in YouTube. स्टार्टअप्स कम्युनिटी में को फाउंडर अगर आपके पास अच्छा है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो स्टार्टअप है वो सक्सेस होगा। अगर कोई स्टार्टअप अपना को फाउंडर किसी ग्लोबल लेवल पे सर्च करे, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने को फाउंडर अगर यूएई में या कहीं और पे सर्च करे तो उसको किस तरीके से प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं, या वो कैसे अपने को फाउंडर ग्लोबली सर्च करे? Okay, see,
This is little bit tricky because ultimately I'm sorry to say but इस चीज का बहुत सारी international websites फायदा लेती हैं. Especially this is happening more in Africa. Africa continent के अंदर में बहुत सारे ऐसे co-founders हैं who just try to manipulate the things. So you have to be very much careful in these things unless until it is somewhere through some good reference. ठीक है ना, किसी रेफरेंस के थ्रू है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. नाउ लेट मी टेल यू कि जैसे यूएई की बात करूं तो यूएई में इस तरीके के फ्रॉड एटलीस्ट जो लोकल लोग हैं वो नहीं करते हैं. I would suggest you should go for the people who are the localites of UAE, who are the basically UAE nationals, and believe me, they are such a nice and great people कि they don't believe in any kind of a frauds, right? And second thing, जैसा आपने देखा होगा कि UAE is one of the country across other countries across the globe who is basically believing in innovations, into ideas. एंड दैट्स द रीजन दुबई के अंदर में आप जाकर के देखोगे तो आप यदि एक महीना भी वहां पे रहते हो तो आपको आप पूरा दुबई नहीं घूम पाओगे. मतलब वहां पे या तो कुछ लॉन्गेस्ट है या बिगेस्ट है या शॉर्टेस्ट है, हर चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यानी वो हर चीज को डिफरेंट ही करते हैं. इवन फ्लाइंग कार्स, इवन ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है वहां पर काफी साल से. तो दे गाइज आर बिलीविंग इन इनोवेशन, इन क्रिएटिविटीज एंड आइडियाज, एंड दे आर रेडी टू स्पॉन्सर. इवन आपको शायद पता होगा कुछ समय पहले हमारे अदानी ग्रुप के अंदर में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया. जब अदानी was going into the bad phase, that time they knew that this company is having a big potential and I should not listen all those nonsense things and I should invest into the technology. रिलायंस के साथ में उनका बड़ा टाई अप है. तो कहने का मतलब है कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिसके अंदर में आप अच्छे को फाउंडर ले सकते हो. एंड एक चीज बस छोटी सी आपको बोलना चाहूंगा, डोंट गो टू द ईस्ट. Okay, don't go towards China because many of the startups are being funded by China and literally they are being hacked in a slow process. So don't go for those things. Chinese के अंदर में बहुत बड़े बड़े वो लोग प्रलोभन देते हैं, ये करते हैं, because ultimately they do have a different kind of a game set plan. So UAE के अंदर में locals पे आप जा सकते हैं और किसी रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं, और कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू. Okay, so thank you very much once again on behalf of Jabalpur Smart City and Jabalpur Incubation Center. We're grateful to you, Vinod ji, for your time. And uh, all our startup, I also recommend to you connect with Vinod Tiwari ji. If you have any other question, you can ask him by using the different social media platform. Once again, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much.